Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another episode of the LSU Conversations podcast. I'm your host, Gauher, with my co-host, Moneeza. And today we're joined by Danish Khan, who is a social entrepreneur, and he's CEO of the Kaarvan Crafts Foundation. He has over 20 years of experience where he's been working to reduce gender differences, to create opportunities for marginalized women to earn an income for themselves and gain their empowerment. And with the Kaarvan Crafts Foundation, he's reached the lives of almost 25,000 women in over 1,000 villages across Pakistan. It's quite amazing, Danish Saab. And you've been acknowledged by the Prince Charles British Asian Trust and the World of Difference Award. And you're a recipient of the LUMS Vice Chancellor's Alumni Achievement Award. So I guess out of all of these major accomplishments, Danish, which is the one that ranks highest for you? Interesting question to start with, Gauher Saab. I think जो एल्मा मेडल से मुझे रिकग्निशन मिली है, it's very dear to me. बाकी तो ठीक है, अपनी जगह उनकी भी इम्पोर्टेंस होती है, but something that have played a very pivotal role in making you what you are. Very formative years during the business degree there. So I think that's it. Well, it's been like 15 years now. This journey ke baad pure, and you've been recognized as somebody who's बहुत बड़ा एक माशाल्लाह हमारा alumni network है, जिसमें जो है ये recognition मिली. I'm very humbled and I'm proud of this achievement. बिल्कुल, जब अपनी इज्जत करें तो फिर उसकी कोई खास ही बात होती है. बाहर के लोग तो चले इज्जत थोड़ी बहुत दे ही देते हैं काम देख के हमारा, बट अपनों की अपने peers की आंखों में respect पाना for your accomplishments and achievements, that's definitely an honor. And the Kaarvan Crafts Foundation is something that obviously, we've known for a long time about it. It's been in operation since 1998. As I mentioned, they've reached about 1,000 villages with so many different projects. So आपकी website के ऊपर हमें नजर आते हैं. आज का episode is more to discuss the impact that you've had on the lives of rural women through the crafts industry and the training that you provide, the market access that you provide, because that is something that touches our heartstrings at two levels. ना सिर्फ gender empowerment का हमारा एक मकसद, हमारा एक मिशन पूरा होता है पाकिस्तान का, उनको आमदनी भी उनकी बढ़ रही है, नो डाउट फिर उनकी जो बच्चों की फ्यूचर्स हैं वो बन रहे हैं, उनके एजुकेशन की तरफ रुझान पड़ रहा है, they're getting out of the trap of the systemic poverty that we have. बट साथ साथ में हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को भी जिंदा रखा जा रहा है, जो हमारी रिवायात हैं उनको भी कंटिन्यू किया जा रहा है. they're being brought into the 21st century, they're being made market viable. तो इस पे Danish, just give us a bit of a lowdown on how this process works, what kind of programs you guys are doing in this space. Just walk us through that. Gauher, over a period of time, like बहुत चीजें जो है, I think जो conventional way of looking at things, वो बड़े question में आए हैं in terms of what the vocational skills are, what empowerment, बड़े वो एक commonly used jargons बन चुके हैं, women empowerment. So I think इन सबको एक critical तरीके से जो है ना देखने की भी जरूरत है. And this is something that Kaarvan actually उसके बड़े ethos में यही चीज एक है कि इसको एक for instance only from supply end चीज को देखने के बजाय demand end से देखा जाए उस चीज को. So एक तरीके से जो है ना unpack कर रहे हैं जो मुख्तलिफ narratives हैं, मुख्तलिफ lenses हैं देखने के empowerment वाले space में काम को. So primarily जो इसको देखा जाए कि हम लोग करते क्या हैं, I think it's called the theory of change that we have. It's a triple E mechanism, which is educate in life skills, enable to earn, and empower to decide. So when you say educate in life skills में जो है वो it's the vocational skill part, which is what we now term as talent honing. It's a different way of looking at vocational skills. Vocational skills are a very narrow way of a particular way of
doing something. We call it talent honing. So this educating life skills is just talent honing, and then the other confidence building skills which are necessary to be able to कोर आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी एड्रेस हो, जो कि बाद में जरिया बने, which is enablement to earn वाले हिस्से में. Enablement to earn is when you connect them to the markets, और वो स्किल्स जो बात की गई हैं वो आपके अर्निंग का जरिया कैसे बनने में रोल प्ले करती हैं. So educating life skills and enable to earn. Enable to earn is again the very conventional way of connecting them, the entrepreneurs to the market, and also now through the digital means. So as we move forward, I'll share how the digital space and the digital enablement is unpacking within the rural ecosystem. And then empowerment is an outcome. When a woman becomes an economic partner, and when she has some income coming in through some entrepreneurial activities or providing of the service, then she's empowered. Then the empowerment takes place, and the empowerment is actually where she's empowered to decide. The other part, the last part is the empowerment is empowerment to decide. And when she's deciding about her children's health, her children's education, how many children does she want to have. So the decision making in the household, I think that is the key empowerment that takes place. So now this is how what we do, and we do it through different. This is our theory of change, and all the work that we do, all the variables that we try to address is around these three elements. So there are different partners that partner with us. Some are partnering with us on the education side. Some are partnering with us on the enablement side, and yes, now on the empowerment side as well. And also, the important thing is that to look at this thing, look at this women empowerment aspect not as a women issue, but as a human issue, as a human development angle to it. So it's not to be looked at as something more of as in a power structure, like somebody, a man or woman aspect. It's like it's a total development. It's a human development thing that we take it up as. So Danish Saab, Moneeza wants to definitely ask you a little bit about the crafts element of this particular space in which you operate. I know there are many ways of providing an individual, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, the skills that allow them to earn a living. लेकिन मेरा आपसे सवाल, क्योंकि आपने empowerment की बात की, theory of change की बात की, तो ये हमसे हमारा प्लेटफॉर्म काफी यंग लोग फॉलो करते हैं और काफी यूथ की कोशिश होती है कि वो समहाउ कोई ना कोई प्रोजेक्ट के ऊपर बनाएं या डिजाइन करके उसके ऊपर काम करें जिससे इस तरह का आउटकम अचीव हो सके. वन क्वेश्चन दैट कीप्स कमिंग बैक इज कि लेट्स सपोज कि आपने किसी रूरल एरिया या किसी स्लम एरिया की किसी खातून को कोई स्किल्स अता कर दी है, यू ट्रेन्ड देम इन समथिंग, या उनकी कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई टैलेंट, इनेट टैलेंट था जिसको आपने होन कर दिया और उन्होंने उससे आमदनी जनरेट करना शुरू कर दी. हाउ डू यू मेक श्योर दैट विद इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे अभी भी वो उसी सोसाइटी का हिस्सा है, उसी बस्ती में रहती है, उसी रोडों पे उसने जाना है जहाँ पे वो तमाम पेट्रियार्की अप्लाई करती है, उन्हीं थानों में वो जाएगी, उन्हीं अस्पतालों में वो जाएगी, वही मेल पावर स्ट्रक्चर्स हैं. हाउ डू यू मेक श्योर कि वो पैसे उसी के हाथ में रहते हैं और उसके जो जिंदगी के मर्द हैं जो उसके इर्द गिर्द उसको पहले ही मार्जिनलाइज करते थे, वो वही पैसे उनकी जेबों में नहीं जाता? How do you make sure of that? How does empowerment actually work on the ground? This is a very good question. I think the control over the income that she's earning, it's a challenge because this it's not the patriarchy is not only, I think it's
it's more of the other barriers combined. Many times there are barriers in the community जो उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं. अच्छा, ये इसमें ये जरूर चीज एक देखने की वाली चीज है कि ये इस प्रोसेस में से जो खवातीन इस प्रोसेस में से गुजर के निकल गई हैं आगे, अब नाउ दिस चेंज स्टोरीज जो है वो कैसे जो है वो अपनी कम्युनिटी पे इम्पैक्ट डालती हैं. नाउ आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज टू कि ये जो रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने एक घराने को तब्दील किया, और जो घराने की बात जब मैं कर रहा हूं वो पर्टिकुलरली द मेन इन द हाउस, आपने अपने जो है खावन को, भाइयों को और बाकी जो है उनको कैसे जो है विच इज द बिहेवियरल चेंज एलिमेंट दैट इज देयर. और ये ऐसी बहुत ज्यादा कहानियां और केस स्टडीज हैं. जो आइडिया है ना, जो इवन यूथ के लिए भी आपने बात की, आगे जाके बात करेंगे, आइडिया ये कि वो जो है वो उनको रोल मॉडल्स को पेश किया जाए. और जब रोल मॉडल्स को पेश किया जाए तो वो सिर्फ, और वो कम्युनिटी, वो है असल में भी कम्युनिटी रोल मॉडल्स, कम्युनिटी लीडर्स, मेंटर्स. सो वो जो है वो उनका वो सिर्फ खातून नहीं है, वो द हाउस होल्ड. सो वो जो एक जरिया है ना कि यार ये आपके घर की बेहतरी, घराने की बेहतरी जो है वो सिर्फ खातून की बेहतरी, घराने की बेहतरी, जिसमें मर्द ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, चेंज हुआ बिहेवियर. सो वो आई थिंक वो बताना जो है ना वो बड़ा जरूरी है. वरना जो है ये द कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस, बिकॉज मोनेटाइजिंग अदरवाइज भी इवन वुमेन वर्क जो भी एक वो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. बहुत ज्यादा जो होम मेकिंग टास्क होते हैं हर घराने में, हमारे कल्चर में है, उसको मोनेटाइज करना भी एक जैसे नॉन गोइंग डिबेट अबाउट दैट कि यार उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, उसको किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए. सो लेकिन एक नजरिए में, एक सोच में इक्वालिटी, ये आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. और दूसरा ये होता है कि जब खातून, एक तो दो चीजें हैं इसमें, जो कंट्रोल ऑफ इनकम की बात है. बहुत सारे ऐसी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो अब जिनको माइक्रो नहीं कहना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स ही कहना चाहिए उनको, गौर साहब, उसमें जो है वो अब डिजिटल मीन्स में बहुत ज्यादा उनके अपने अकाउंट्स हैं, अपने उनके इवन डिजिटल अकाउंट ये भी बने हुए हैं, मोबाइल पे भी और उस पे भी. सो यस, देयर इज नो कंट्रोल. जैसे जैसे वो पैसा कमाने वाले साइकिल में फंस जाते हैं, वैसे वैसे कंट्रोल भी आ जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ मनी दैट दे अर्न, दिस वो उनके वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है. और जब ये एक घराने को पता लगता है कि यार हाँ ना दिस मेक सेंस, सो वो बहुत ऐसी चेंज स्टोरीज हैं, और असल में होता भी है बहुत ज्यादा कि द मेन इन द फैमिली एक्चुअली वो जो उनके लिए एक वक्त में एक बैरियर थे, वो फिर they come together and they become part of that entrepreneurial activity. So I think उनको सामने लेके आना भी जरूरी है. और आई थिंक जब से ये डिजिटल मनी आ गई है उस वक्त से जरा कंट्रोल बढ़ गया है, वरना कैश जो है ना वो इट्स इजियर टू ग्रैब अदरवाइज. You know, this is a fascinating thing, and we will revisit this in this conversation. कि जो एक social capital या एक social standing है किसी इंसान की, वो कितनी ज्यादा उसकी इनकम जनरेशन से लिंक्ड अप है. और जब इनकम जनरेशन हो जाए तो ऑटोमेटिकली कैसे वो इंसान अपने बाकी घराने के मेंबर्स की आंखों में उसका स्टेटस बढ़ना शुरू हो जाता है और इक्वालिटी या एम्पावरमेंट की तरफ हो जाता है. इट इज वेरी यूनिक. और आजकल मैं और मुनीजा इर्तुगल बड़ा देख रहे हैं, तो उसमें तो यही होता है कि जो ही पैसों की कमी आती है तो वो कहते हैं अच्छा चलो जी हाथूनो जाके अपना ये कारपेट्स बनाना शुरू कर दो, पैसों की बड़ी जरूरत पड़ गई है. तो एनीवे, सो इट लुक्स लाइक कि 1000 साल पहले भी यही चल रहा था काम. मर्द जाके लड़ाइयां करते थे और औरतें ही कमाती थी. मुनीजा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क अबाउट क्राफ्ट्स? You're muted. This is so yeah, I mean, thank you for sharing your work
And since you talked about the artisans and the entrepreneurs that you're producing through your platform, uske saath mein I would like to talk about the products, right, and the crafts that are basically they are producing. And whenever I basically get a chance to look at, let's say, the Kaarvan Crafts Instagram feed or the website, there's some really, really unique things that I come across, and and I want to know more about them. So just to ask you, कि जो crafts हैं जो आप produce करते हैं, since you work with such a diverse in such diverse areas, तो अगर आप थोड़ा सा just take us through those कि मतलब geographically किस type के crafts हैं जो आपके platform के through आप लोगों तक पहुंच जाते हैं, and with the follow up के जो ये artisans या जो लोग हैं, इनको जो है आप skill training खुद देते हैं या पहले से उनको ये आती है, and you discover the kind of craft they already the skill they already मुझे इसमें जो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ना, वो उसको आप एनहांस कर सकते हैं, सिखा नहीं सकते, उसमें तो सीखने वाला एलिमेंट ज्यादा है. सो अब एनहांस करने का मकसद भी यही है कि उसको उस तरीके से किया जा सके जो कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के तौर पे सामने भी आ सके, और वो जो एक ही तरह की चीजें हैं जो उस क्राफ्ट के अराउंड हैं, उसमें से भी थोड़ा सा एक जिद्दत उसमें आ सके, इनोवेशन आ सके. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ज्यादातर जो है कि खवातीन का है वो 2-3 चीजें हैं जिनमें करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज विच आर वेरी पिक्यूलियर टू पर्टिकुलर रीजन. आप सिंध में जाएंगे तो वो और चीज है, और उनके सिंध के और विलेजेस में जाएंगे और चीज है. यहाँ पंजाब में, साउथ पंजाब में जाएंगे तो वहां भी अलग अलग क्राफ्ट्स हैं, particularly around fabric and embellishment. So वो उसके around जो है ना ये सारे move around करती हैं. And there are so many, when you go deep into it, there's so many different types of what they call tankas in embroideries. कोई कच्चा टांका है या फिर कोई शेडो का काम है, कोई जो है वो एप्लिक का है, कुछ मुकेश का है. So there are so many different crafts that are very local to a particular geographic area. अभी भी जो हमारा हर तरफ जैसे मेरे ख्याल में कुछ अब तो बहुत ज्यादा ऐसी भी चीजें हैं जो मशीन और टेक्नोलॉजी ने उसको जो है रिप्लेस कर दिया है, बट स्टिल जो एक जिसकी वजह से शायद इन क्राफ्ट की जो है वो एक तो उसकी अहमियत शायद बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ एक हैंडमेड चीज को, जो पहले एक शायद जो जिसका वॉल्यूम शायद ज्यादा होता था अब वो उतना कम नहीं है. उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन उसकी शायद एक कंज्यूमर के लिए भी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. भाई ये हाथ से बनी हुई चीज है, ये इसकी अपनी. सो ज्यादातर जो है ना वो टू आंसर योर क्वेश्चन, ज्यादातर जो है वो एम्ब्रॉयडरीज बेस्ड काम होता है. उसमें बेतहाशा वैरायटीज हैं जो वो सामने आती है. उसमें अब वो इम्पोर्टेंट जो चीज हो रही है ना, विच इज अ फ्यूजन, और ये और द क्वालिटी ऑफ द वर्क हैज इम्प्रूव्ड. आई थिंक एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है. एंड आई थिंक जो एग्जीबिशंस होती हैं, हम लोग भी काफी एग्जीबिशंस करते हैं, और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है जो कर रही होती हैं. सो उसमें ये होता है कि जो वहां के इकोसिस्टम में भी ना देयर आर कम्युनिटी बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसी कम्युनिटी की, जो कि एक जमाने में हो सकता है वो होम बेस्ड वर्कर ही हों, बट समहाउ दे मैनेज टू कनेक्ट टू द मार्केट, और उनके किसी वैल्यू चेन में किसी प्लेयर के साथ उन्होंने वो दिखाया, काम दिखाया, बढ़ गया. और शी वांटेड टू
अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए, अर्निंग्स बेहतर करने के लिए, शी कनेक्टेड टू समवन इन द वैल्यू, और वो उसके साथ साथ उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई. So not everybody get this opportunity to actually हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर को ज्यादा वो नहीं तंग करते कि यार जो उनके घर में जिस तरीके से, बट वो उनको जो है वो काम लाके होमलेस वर्कर्स को देती हैं, वो उसी कम्युनिटी की. सो दे आर लुक्ड अप टू, वो उस कम्युनिटी की एक तरह से मेंटोर भी हैं, कम्युनिटी लीडर भी हैं, और एक एक्टिविस्ट का रोल भी प्ले कर रही होती है. सो इट्स नॉट ओनली एन इकोनॉमिक लिंक. सो ये जो करवाती हैं, जब ये एग्जीबिशंस पे आती हैं, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनकी जो भी feedback आती है, I think over a period of time the quality of work has improved a lot, and there's a lot of fusion taking place. So these micro entrepreneurs, जो अब तो entrepreneurs ही माइक्रो का शायद गलत इस्तेमाल करते हैं खवातीन के लिए, जो ये very lean period में भी वो they know how to manage their funds, or flush period maybe they just season maybe they make good money. So वो जो है ना, वो I think innovation भी बहुत होने लग गई है इस पूरी, मतलब combination of some सिंधी क्राफ्ट अजरक जो होगी, उसपे जो है एप्लिक के साथ काम हो रहा है, उसपे जो है कुछ और चौटान का भी उसमें ऐड हो रहा है. So some kind of differentiation is also taking place. So yeah, it's a very organic, innovative industry that is there. So yeah, और consumer के लिए भी I think थोड़ी सी variety भी जरूरी होती है, because there's so many other clothing brands coming up. So और दूसरा जो एक authenticity है ना of buying something from the source, I think that's a very unique proposition. Otherwise जो है वो you always have somebody as a middle, as a value added player in the market. So when they themselves are there, so उसकी एक अपनी एक when you know that somebody from करोड़ पक्का या फिर दादर फोर्ट में जो है वो प्रेमी माई जो हैं उनके हाथ से बनी हुई ये चीज है. So it has more of value to anybody there. And these micro entrepreneurs, Moneeza, these entrepreneurs, they are very good negotiators. It's not that they know what they're doing. I'll share one of the videos with you if you बाद में कभी ना आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा. आप वो देखना, वो they know the business. That's very heartening to know, actually, because obviously, this is something that they can totally do. They are like, so skilled in all of this, and gradually, perfect their skills. So this is great. So just like you were also mentioning, कि जो fusion अब शुरू हो गई है. पहले तो I would like to ask कि जो crafts हैं, वो एक तरह से, if you agree, कि जो है crafts से भी हो रहे हैं. Like you said कि काफी ज़्यादा crafts हैं जो कि, प्रैक्टिस नहीं हो रहे, लेकिन उसके अंदर या कम उनको अब क्योंकि मशीन वर्क में ट्रांसफर कर लिया, बट देयर सम क्राफ्ट्स दैट प्रॉब्ली कैन नॉट बी डन दैट वे, राइट, या उनकी मैस प्रोडक्शन नहीं हो सकती. तो एक तो सिंस दे हैव लाइक लर्नड ऑल दीज थिंग्स over the years, or they have been passed them by through generations. तो एक तो ये क्राफ्ट है, इनको पहले से they like family run and they come through that and are willing to share it with other artisans or other people in their communities. And secondly, when it comes to the fusion part of it, when they start thinking about how to make it a more saleable item, तो जो उनकी fusion वो करते हैं आजकल के ज़माने के मुताबिक, एक तो जाहिर है जो original काम है की तो अपनी मार्केट है, फिर जो फ्यूजन के ऊपर बारी आती है, are they innovating those products themselves, or do you have some designers or certain middlemen, or or women who are basically working with them to basically create those items which are fusion products, and or is it completely like their own doing? पहले सवाल का आपका जो था कि do they share it with the community? Oh yes, they are. I think
they share it with all their heart. Whatever skills that, because they understand के जो स्किल अगर एक दूसरे को आती है, किसी को आती है, तो वो साथ उसको एक एडिशनल चीज बता देंगे. Very quick in understanding each other's innovation या फिर उसमें जो भी काम के बारे में तरीकेकार है उसको करने का. और ये फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें करने में. आई थिंक सो वो उस वजह से वो, और वो जनरेशन टू जनरेशन वो चीज आई हुई है. सो वो इट्स देयर इन द कम्युनिटी. जो ये चीज जो हुनर जो पर्टिकुलर क्राफ्ट उस ज्योग्राफिक एरिया का है. सो और वो बड़े वहां वो एक मिलजुल के बैठने वाला, मिलजुल के काम करने वाला, और मल्टीटास्किंग तो है ही है, लेकिन जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो वो फिर कैन वी एक्चुअली प्रोवाइड देम विद दिस एनवायरनमेंट टू एक्चुअली इकट्ठे हो और उस पे कुछ इकट्ठे बैठ के काम शाम कर सके. दूसरी चीज वो ये कि ये जो है इनोवेशन कहाँ से आती है. सो दैट इज वेयर द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कारवान कम्स इन, जिसको कहते हैं ना कि एक ये चीज जब तक इसमें एक मार्केट के लेंस से जब तक इसको नहीं देखेंगे तो सिर्फ सप्लाई साइड पे काम करके कि भाई उनको किसी तरीके से कुछ स्किल दे दी जाए, एक ही चीज को मतलब रिपीट करते जाए, उसका कोई हल नहीं निकलेगा. वो मीनिंगफुल जब तक एक इकोनॉमिक उसके रिटर्न्स नजर नहीं आएंगे उस वक्त तक वो उसका कोई फायदा नहीं है उस चीज का. दैट इज व्हाई many you'll find many young generation in this craft space, particularly जो rural areas में जिनके आबाव अजदाद करते थे, so they are actually getting away from it because they don't see returns coming out from that activity. So that is where the organizations like Kaarvan comes in. So हमारे अपने डिजाइनर्स जो हैं और मार्केट प्लेयर्स एज वेल. सो हमने जो भी अपने तरीकेकार होते हैं उन तक पहुंचने के, वो बड़ा एक डिमांड वाले लेंस से हम चीजों को देखते हैं, विच इज द मार्केट लिंकेज एलिमेंट. कि जो वो चीज बनाएं वो एक डिमांड के थ्रू बना रहे हो कि ये चीज चाहिए, ये इतनी कीमत में चाहिए और ये इसमें लेके आनी है. बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज हो सकता है कि जिसको इनोवेशन कहा जाए, वो कुछ चीज होती है ना कि पूरी एक आपने कोई एम्ब्रॉयडरी बनाई है, उसको पूरे को भर दिया है. सो वो इट विल हैव इट्स ओन कॉस्ट, टाइम, सब चीजों को उसमें जो है ना वो क्वालिटी सब चीज उसमें आएंगी. लेकिन जो डिजाइनर्स कम इन, हमारे अपने जो टेक्निकल डिजाइनर्स भी हैं और दूसरे फैशन डिजाइनर्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और रिटेलर्स भी हैं. सो वो जो है ना वो बेसिकली यही एक जो कुछ ट्रिक्स और कुछ फाइनल एलिमेंट्स दैट यू डोंट नीड टू डू इट एवरीथिंग. something somewhere would do. You don't need to और शायद वो क्विकली भी चीज हो जाए उस चीज को. और सो ये जो चीजें हैं ना, आई थिंक ये चीज एक तो कॉस्ट को भी नीचे ले आती है एक तरीके से, और दूसरा द स्पीड जो डिलीवरी टाइम है वो भी ज्यादा क्विक इनफ हो जाता है, और एक खुद ब खुद एक डिफरेंशिएशन भी उसमें आ जाती है. सो दिस इज द इनोवेशन, दिस इज जो अगर ये नहीं होगा ना सो वो इट विल डाई डाउन. और दूसरा जो है वो यू सी जो एम्ब्रॉयडरीज वाला जो स्पेस है ना वो इट्स अ पीस ऑफ क्लॉथ. अगर इसको एक और एंगल से देखा जाए, वो हम उसको कमीज के एंगल से देखेंगे या फिर किसी शॉल के एंगल से देखेंगे, बट अगर एज अ पीस ऑफ क्लॉथ देखा जाए तो इट opens up lots of opportunities of what can be done with it. You see, now these are the things that
जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है ये मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, एक्सेस टू द न्यू ट्रेंड्स, access to the financial institutions, access to the markets, and मतलब अगर हम यहाँ बैठे अर्तुगरुल देख रहे हैं तो वो वहाँ बैठे अर्तुगरुल देख रहे हैं. So you see, so these are the new realities, and what can be accessed through social media platforms is phenomenal. Yeah. So नहीं, that is very fascinating. और ये भी बड़ा आपने अच्छा बताया कि बेशक at the end of the day जो ट्रू स्किल है वो एम्ब्रॉयडरी की है, और फिर जो विजन एक डिजाइनर इम्पार्ट कर सकते हैं वो है कि भाई आजकल शहरों में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, and then whether right now less is more, a very tastefully placed certain type of embroidery on a much smaller percentage of the garment is more tasteful. तो फिर अच्छी बात है वो things are getting the recognition they need, the income is also being generated, and the volume is also scalable. कल को यही चीज कुशन्स पे हो सकती है, पर्दों पे हो सकती है, हजारों और एप्लीकेशंस हो सकते हैं इस चीज के. तो I'm glad to see that happening. I also wanted to, more than just the product. We've heard a lot about the product and the process. I also would ask you to get into the details of the human side of these things. Moneeza and I, about a couple of years ago, Moneeza की research चल रही थी, तो हम लोगों ने लेबनान विजिट किया. तो वहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन से मिले जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दे रही थी, कि जो उनकी लेबनानी पर्टिकुलरली जो उनकी पिकल्स बनाने का ट्रेडिशनल स्टाइल था, क्योंकि कुछ हैं जो सिर्फ लेबनान में ही किस्म की एक तरीके हैं पिकल्स बनाने के जो उनके खानों में बड़ी इस्तेमाल की जाती हैं. तो वो रिवायती तरीके चीज बनाने के, पिकल्स बनाने के, वो सारा कुछ वो खवातीन को सिखाते थे एग्रीकल्चरल सेटिंग में. And they used to tell us कि बहुत सारी खवातीन आती थी, जिस तरह आप कह रहे हैं, they would learn that, they would do very well, उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता था, फिर उसकी वजह से उनका ना सिर्फ वो खुद एम्पावर होती थी, लेकिन वो एम्पावर होती थी by the whole family moving forward and crossing a certain mental threshold, and they would kind of be like the exemplary families in the village. और फिर वो उनको देख के बाकी लोग भी फिर थोड़े से उनका नाम, मतलब उनका माइंड रोशन होता था, वो आगे बढ़ते थे. वो हमें ये भी बताती थी कि there were cases where women would be in a very difficult position, कि उनकी बिल्कुल 12-13 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी हो गई, जिस घराने में वो रह रही है वहां पे वो ऑलरेडी काइंड ऑफ एक नौकरानी बन के रह रही है, उसको पूरा घराना मारता है और एक स्लेव की तरह वो ट्रीट करते हैं. और फिर जब वो बच्ची 2 घंटों के लिए जाके ये क्लास अटेंड करती थी, तो उनको भी रियलाइज हो गया कि ये बच्ची जो है वो अपनी काइंड ऑफ जिंदगी में पहली दफा एक लिबर्टी और सुख का सांस ले रही है. 2 घंटे इसको मिल रहे हैं जहाँ पे कोई इसको अटैक नहीं कर रहा. और वो बच्ची भी उनको आके कहती थी कि यहाँ पे आके मुझे लगता है कि जब आप लोग मेरे नाम से मुझे पुकारते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली एक जिंदा इंसान, क्योंकि वरना घर जाके मेरी जिंदगी मुझे लगता है कि बंद हो चुकी है, बिल्कुल ही अंधेरा मुझे नजर आता है. तो शेयर विद अस सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, सम ऑफ द चैलेंजिंग स्टोरीज दैट यू हैव फेस्ड, so that our viewers can get more of a human picture of this problem that you're tackling. गौहर, इस पे रियलिटी भी है जो आपने बात की है, बिल्कुल वो लेबनान में जैसे हर जगह जो है वो पॉवर्टी का एक पिक्चर यही है. हमारे पास तो वी आर इन टर्म्स ऑफ द जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें वी आर 151 out of 153 countries. और 10 साल पहले भी यही थे, we were like 132 out of 134. And बाकी भी जो इंडेक्सेस हैं उसमें भी एक ग्लोबल पिक्चर जो है वो एक स्टैंडिंग जो है in terms of even the region, Bangladesh is on 50. So ये एक रियलिटी तो है अपनी जगह, जिसमें जो है वो सबसे जो इस पूरे जो इस डेवलपमेंट में के काम में, पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज में काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, सबसे जो चैलेंजिंग काम है ना वो मोबिलाइजेशन है. टू मोबिलाइज देम, टू ब्रिंग देम टू अ क्लास ऑफ, जैसे हमारी एक 20 लड़कियों की एक क्लास होती है, तो एक सेंटर में हम भी 5 क्लासेस चला रहे होते हैं. ये सबसे मुश्किल काम है मोबिलाइज करना. वजह उसकी ये है कि बैरियर्स जो है ना वो बेतहाश हैं.
in terms of it's not only the patriarchy as I mentioned for पूरी community, ठीक है. So उस inertia को break करना ना, अच्छा उसके लिए हम फिर भी take role models कि यार जो सिलसिले उस प्रोसेस से गुजर के उसने आपको बेहतर किया है, सो वो और उस कम्युनिटी का ही है की है, सो वो जाके जो है ना वो उनके साथ यूज दोज एज अ मोबिलाइजर्स एज वेल. और very inspiringly खवातीन होती हैं, they are more of an activist if you have to term them. So ये एक जब वो आ जाती है ना, अब you see एक जिसको हुनर कहते हैं, जिसको मैंने कहा ना कि वो हम उसको टैलेंट होने की बात जो मैं कर रहा था, सो वो अब वो आ गई है, वो 3 महीने के लिए इधर ही है. नो व्हाट वी डिड कि यार ये 3 महीने के लिए अब इन्होंने आना है, और यकीन जाने जो आप पहले हफ्ते उनके पास जाएंगे ना, सो वो आप यू ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चन एंड यू कुड सी दैट वो उनके अपने वो बैरियर्स हैं टू कम्युनिकेट टू यू. आप 2 महीने बाद जाएंगे ना और आपने किसी की स्केचबुक अगर नहीं देखी तो दे वुड जस्ट वॉइस इट आउट कि सर ये आप आए हैं तो अपने तो हमारी भी मेरी भी देखी आपने, एंड दे वुड जस्ट शेयर द स्टोरीज जो भी उन्होंने, एंड देन दे फील सो एक्चुअली दे फील सो हैप्पी बीइंग टुगेदर. एंड व्हेन दे सी ना कि यार ये पूरे इतने जैसे क्लास में बाहर में इतने ज्यादा मुख्तलिफ जगह से आए होती है खवातीन, और उनकी भी पर्टिकुलरली सेगमेंट एक होता है, सो वो उनके बैरियर्स भी जैसे होते हैं, और उसमें जो है ना वो रेंज है. कोई होती है जो यंग एंड देयर आर फ्यू एक्सपीरियंस जो है वो बड़े, सो दे कुड एक्चुअली शेयर ईच अदर. वो बड़ा एक तरह जो अब हमने भी ये देखा कि वहां जो लर्निंग शेयरिंग होती है ना, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. एक ये एस्पेक्ट है इस पूरी चीज का. दूसरा ये कि हमने देखा यार इधर आ गई है, अब इनको स्किल तो दे रहे हैं भाई, हुनर जो है वो आपको लेकिन जो जज्बा और जो कुछ करने की लगन है ना, जो आपने आ जाते कि यार तू विल टू डू समथिंग, वो अगर अपने साथ आप ले जाते हो ना इस सेंटर से 3 महीने के 4 महीने के उसमें, आप सीख जाओगे कुछ और. लेकिन सीखने की वो एक जुस्तजू और एक वो कोई यार मैं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं इधर आ गई हूँ. सो दैट्स अ ह्यूज बैरियर दैट दे क्रॉस कि यार 3-4 महीने के लिए इधर आ गए हैं, वो अपने जैसे 20 लोगों से मिले हैं. So you see there's a lot of energy that is there. वो अगर साथ चली जाती है ना, तो वो that would make them do. वो हो सकता है वो जो हुनर मैंने यहाँ सीखा है, which is stitching for instance या फैशन डिजाइनिंग, वो हो सकता है दोबारा वो उसको उस नजरिए से इस्तेमाल ना करें, लेकिन पता नहीं कुछ और कर देगी, कुछ और मतलब इसी वो देखो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग. इसी जब सवाल करना आ जाए किसी एक सिस्टम के थ्रू, सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज एक मजेदार एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट बड़ी इसमें होती है. दूसरी इसमें जो एलिमेंट है ना वो ये है कि once they are here ना इकट्ठी हो गई, so there are so many things that can be done. Meaning it's not only the skill part that has to be provided. No, we've involved some of the lawyers as well to provide them legal what are the laws that actually उनके लिए उनके सहूलियात के लिए बने हुए हैं, जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है कि उनके इशू चैलेंजेस होते हैं कि भाई आपको हमारे सिस्टम में ऐसे है कि कोई मेनी विडोज कि जो है निकालना चाह रहे हैं घर से, और शी हैज टू डू इट. अब हू डज शी गो टू? ये सारी चीजें जो और कानून में क्या क्या चीजें हैं जो कि उनके लिए लीगल क्लिनिक्स, वो लॉयर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, दे आर डूइंग इट. सो नाउ उस 3 महीने में और बहुत कुछ किया जा सकता है. सॉफ्ट स्किल्स दे रहे हैं उन्हें, मतलब देर अदर जिसको कहते हैं कि वोकेशनल स्किल्स और टैलेंट होने के साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप्स हो रही हैं, व्हाट वी हैव टर्म्ड एज काउंसिलेशन ऑफ चेंज, और वेरी गेम ओरिएंटेड तरीके से जो है ना वो उनको वो चीजें उनके साथ वो एक्टिविटीज हो रही हैं. सो एक तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. फिर हेल्थ के लिए भी वी हैव सम, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज आल्सो वन ऑफ द वेरी की एरियाज. अदरवाइज हेल्थ जो एक
फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ वेरी, बहुत ज्यादा हैं जो हमारे टेबूज हैं जिनके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल. सो वी हैव ऑल फीमेल स्टाफ देयर. सो वो जो है वी हैव सिस्टम के कुछ डॉक्टर्स और कुछ साइकोलॉजिस्ट उनको इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो आके उनसे वो बात करें. पिंक रिबन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ भी है कि वो जाके उनसे, क्योंकि ये बड़ी चीजें हैं जो कि फिर पता नहीं होता है इनके बारे में, हाइजीन सैनिटेशन की चीजों के बारे में भी. सो वो यू सी एक तो ये एलिमेंट है कि वो आ गई है ना, नो उस 3 महीने में उनको सोच ले दी जाए कि यार these are things which are probably important for you. प्लस इसके साथ वो ये कि जो क्योंकि इनको भी जो फॉर इंस्टेंस जो छोड़ने आते हैं, जो लेने आते हैं बाप, क्योंकि जब इनको जब रजिस्टर करते हैं ना, सो वी मेक श्योर दैट द फैमिली मेंबर्स आर देयर एज वेल, ताकि दे नो दैट के जो है वो क्या उनकी बेटी या बहन या बेगम या वालिदा वो किस चीज में इन्वॉल्व होंगी, क्या पढ़ेंगी, क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. सो और ऑल्सो वी हमारे कल्चर में ना वो बड़ा हो, बड़ी हो, छोटी हो, वी कॉल देम बाजी. सो एक ऑलरेडी एक जो है ना वो एक बैरियर ऑलरेडी इट्स इन द कल्चर के. सो यू सी and very interestingly, Gauher and Moneeza, now the very way that the realization among the men is on the rise. This ecosystem में there's more of a it's okay for their daughters and for their wives and for female in their families to be skilled. And they also see not only the social benefit of it, now they see the economic benefit of it as well. So ये element है. एक और चीज गौर साहब वो ये कि एक और जो समझ आई भी है चीज और जो देखी भी है ना कि ये the very, it's not that in terms of their thinking, they are not empowered. In terms of their approach to tough situations, they are not empowered. It's not like that. They are. And there is this learning is two-way. It is not something that we need to give to them. It is actually this lot that we just learn from them. There's more about help, care, empathy, sharing. ये जो हम urban area में हमें नजर आता है कि it's lacking, being very judgmental about things. So वो वहाँ बड़े guards off type चीजें होती हैं. So the very one of the things that is very dear to us is to इनकी कहानियों को जो है इनकी जो ये जो केस स्टडीज हैं, ये जो खवातीन इनकी स्टोरीज को भी शेयर किया जाए और दुनिया के साथ, because they are it's not कि they are already empowered. It's just that कि हमें उस चीज को जो है ना हम उस नजरिए से उसको देखते नहीं है कि हम हमेशा देखते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. It's not that perspective that we have. That's a very important thing.